Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू बढ़े मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रु तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई के रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक रे आमे पढ़िबा अबाउट द हीलियम नियॉन और HENE लेजर। सो एटा होची गोटे गैस लेजर। रूबी लेजर जोटा आमे पढ़िला सेटा थिला गोटे सॉलिड लेजर, किंतु से रूबी लेजर रे किछरा आमे देखिला ड्रॉबैक्स आसिला। प्रथम थिला सेथिरे जो आउटपुट बीम टा आसुतला सेटा कंटीन्यूअस नथिला। ओके, ऑल्दो इट वाज वेरी मच इंटेंस, सो सेथिरे आउटपुट टा पल्स आकार रे आसुतला। सो कंटीन्यूअस लेजर बीम पाइबा पई गैस लेजर को यूज करा गला। इन द ईयर 1961 A. Javan, W. Bennett and D. Harriot, okay, they reported a continuous gas laser which is the HENE or helium neon gas laser. So in this HENE laser the active medium is your gas, okay, which is the mixture of your helium and neon gas. Then your resonant cavity are the reflectors, which are maybe plane or concave mirrors M1 and M2, which are placed outside the tube. Okay, तापरे पंपिंग मेकानिज्म टा एई जगह रे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड एठी यूज करा हुए। ओके, रूबी लेजर रे ऑप्टिकल पंपिंग होतिला, एठी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग हबो। ओके, अच्छा आकु बढ़िबा। लेट अस नाउ सी द कंस्ट्रक्शन। देखो हीलियम नियॉन लेजर हमें यदि देखिबा, एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग लेंथ around 50 cm and diameter around 1 cm. Okay, this tube is containing the mixture of helium and neon gases, okay, with a proportion of about 10 parts of helium and 1 part of neon at a pressure of 1 mm of mercury. Okay, actually this gas mixture is forming the lasing medium and the tube is enclosed between the set of mirrors which is forming the resonant cavity. These are the set of mirrors. So ei dui mirror को एबे लक्ष्य करो, एठी गोटे mirror होची totally reflecting आ गोटे mirror हला partially reflecting, so that ei partially reflecting mirror पटु laser beam टा बाहर को आसी परिबो। ओके, सो प्रथमे आमे कोन करिबा, stationary glow discharge will be excited in the gas by applying few kilovolts of DC. Okay, as you can see एठी electric discharge source सहित connection ହେଇची। सो हिसाब रे आमे फर्स्ट किछि परिमाण रे किलोवोल्ट DC आमे फर्स्ट अप्लाई करिबा। आ गुटे जिंस मार्क करो, एठी दुईटा जाको मिरर बाहर अछि। ओके, बिकॉज देयर इज सम डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द मिरर्स इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। कोन से डिसएडवांटेज, काइना जदि आमे भितर यूज करिबा ट्यूब रो, देन द मिरर्स विल बी इरोडेड। इरोडेड मीन्स सेमानकर क्षीण हो जाए तांकर जो रिफ्लेक्टिंग पावर टा। ओके, सो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जदि सेमानकर क्षीण हो गला, इरोडेड हो गला मिरर गुडा को, ताले पुणी आमको से जिनसटा को से मिरर को रिप्लेस करबा को पड़िबो। आल्सो व्हेन external mirrors are used, then there is loss of light at the ends of the discharge tube due to reflection. So याकू कम करिवा पई आमे कोन करिबा, जो एंड फेस अछि ट्यूब रो ताकू आमे इंक्लाइंड करी के रखिबा at Brewster's angle around 57 degree. So एठी जते बेले एबे पास करिवो, एटा तमरो Brewster's window. So while passing through these Brewster's window, the light which will be polarized in the plane of the window, then it will not suffer reflection. Okay, जोटा कि सेही Brewster's window रो प्लेन रे ही पोलराइज हितबो, सेटा किछि भी रिफ्लेक्शन हबोनी। किंतु बाकी जेते लाइट जोटा कि Brewster's window रो प्लेन रे polarized हेई नथिबो, that will suffer reflection. Hence the output light जोटा हमें पाइबा, this will be plane polarized as shown in figure.
Okay, so this is all about your construction. Let us now see the working of the HENE laser. देखो वर्किंग जदि आमे देखिबा फर्स्ट जेतेबेले इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आमे देबा इन द गैस मिक्सचर then obviously some of the atoms of the mixture will be ionized. अच्छा ଏହା द्वारा एबे कोन हबो इलेक्ट्रॉन गुडा एबे एक्सेलरेट हेबे in the discharge tube, and these accelerated electrons will now collide with the helium atoms and excite them from their ground level or lower energy level F1 to the next level F2 and F3 as shown in figure. So the figure re, this is the figure. So एठी लेफ्ट साइड रे आमे एटा देखुछु हीलियम पाई, राइट साइड होची तमरो नियॉन पाई. ओके सो हीलियम रो एटा हला ग्राउंड स्टेट which is F1. so एठू एक्साइट हे गला ये F2 आउ F3 को. ओके अच्छा ये एक्साइटेशन टा होची बाय कोलिजन विथ द इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा सो एबे देखो ए जो दुईटा लेवल एक्चुअली F2 आउ F3, these two levels happen to be metastable states. Okay, thus the helium atoms which are excited to these levels will spend a sufficient longer time before they get de-excited. Okay, acha some of the excited state of neon jodi abe neon ra ame dekhiba, then it will correspond almost to the same energy as the energy of the excited state of your F2 and F3 in case of your helium. Okay, therefore ଯେତେବେଳେ ଆମେ helium atom ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା in the level F2 and F3, they will collide with the neon atoms in the ground level E1. Okay, this is the ground level of neon. So the energy exchange will now take place. ओके एटा जो एक्साइटेड थिबो हीलियम एटमटा सेटा तार एनर्जी ए नियन को दे देबो, एंड कॉन्सिक्वेंटली कोन हबो एबे नियन एटमटा एक्साइटेड हबो, सो दैट ये एबे E1 रो एक्साइट हे कि पुनी हायर लेवल को जीवो E4 आउ E6. ओके दिस इज द E4, दिस इज द E6. ओके ए दुईटा हायर लेवल को ये एक्साइट हे कि पड़ेबो. ओके एंड द हीलियम एटम्स विल बी डी एक्साइटेड, ये पुनी वापस तार ग्राउंड स्टेट को पळे आसीबो तार एनर्जीटा नियन को देखि. Okay, thus the process of energy transfer has high probability. Okay, therefore ଯେତେବେଳେ electric discharge ଆମେ ଦଉଛୁ through the gas mixture, then it is continuously doing or populating the neon excited levels which are E4 and E6. Okay, and hence it is creating a state of population inversion between E4 or E6, which are the higher levels, and the lower levels E5 and E3. Okay, E5 or E3 comparatively lower levels hela. Okay, so ei dui bhitare amaro ebe population inversion ta create he gala, which is the requirement for your lasing action. Okay, देखो एबे जो এই দুইটা স্টেট আমি দেখুछु E4 ଆଉ E6, এঠু নিয়ন एटम जोटा एक्साइटेड हेकी अछंती से माने पुनी डी एक्साइट बा डीके करिवे टू द लोअर एनर्जी स्टेट, so that laser light आमे पाइबा. so there may be three types of transition. गोटे हला E6 ru E3, this one. Okay, which is giving you the red color of laser beam having wavelength 6328 angstrom. Okay, तापरे आ गोटे ट्रांजिशन हे पारे E4 ru E3. ओके ए जो छोटियाटा, सो दिस इज गिविंग यू 1.15 micrometer or 11500 angstrom, which is having the wavelength in the region of infrared beam. ओके एटा infrared region रे आसिला. तापरे थर्ड टाइप ट्रांजिशन आसी पारे E6 ru E5 ए छोटियाटा, which is giving you 3.39 micrometer or 33900 angstrom, and this wavelength is also in the infrared region. So ये तीन प्रकार ट्रांजिशन रो visible spectrum रे आसुची ए जो फर्स्ट ट्रांजिशन एटा E6 रो E3. okay, which is giving you the light red color light laser रो 6328 angstrom. okay, देखो ऑप्टिकल रिजोनेटर रे थिबा मिरर्स गुडा को हमें ए हिसाब रे डिजाइन करके रखिबा in order to have low reflectivity for these two wavelengths. गोटे जो 3.39 माइक्रोमीटर आ गोटे हला ए जो 1.15 माइक्रोमीटर, बिकॉज एई दुई वेवलेंथ आसुची इंफ्रारेड रीजन रे जोटा कि हमर दरकार नै. ओके, सो मिरर को हमें ए हिसाब रे डिजाइन करके रखिबा सो दैट
याकू ये एलिमिनेट करदेव ये दुई वेवलेंथर लाइट को ओके ताहले बाकी जोटा आमर दरकार होची लेजर लाइट पाई दिस वन 6328 angstrom which is the red color laser light lying in the visible range ओके सो एबे एई जो वेवलेंथ रो फोटोन टा कोन हबो it will move back and forth inside the optical resonator system and we will get the laser light having the same wavelength 6328 angstrom and it will emerge out from the partially reflecting mirror ओके एटी आ गोटे जिनस भी नोट कर एक्साइटेड नियन एटम को जदि देखिबा it will de-excite from the level E3 to E2 ओके ए हिसाब रे de-excitation हेई पारे जहाँ द्वारा कि ये spontaneous emission करि पारे and it will emit a photon having wavelength 0.6 micrometer अच्छा एठी जो E2 level अछि this is also a metastable state so there is a probability of excitation of the neon atom from E2 to E3 पुणी थरे excite हबार भी chance अछि so एहा द्वारा एबे कोन हबो गोटे quenching हबो okay this will lead to a quenching of population inversion so याकू eliminate करिवा पई आमे गोटे narrow discharge tube use करिबा because the neon atoms while de-excited to the lower level E1 from E2 they may go through collisions with the walls of that tube okay so this is all about the working of HENE laser आकु एबे जदि देखिबा आमे एक्चुअली जो आउटपुट लेजर बीम टा पाइबा that will be linearly polarized or plane polarized सेटा संभवपर होउची because of the Brewster's window and without the Brewster's window the output light will be unpolarized okay आउ ता सहित जो आमे आउटपुट लाइट टा देखिला रेड कलर रो having wavelength 6328 angstrom एटा होची स्टैंडर्ड वेवलेंथ इन केस ऑफ HENE लेजर तबे ता छडा अन्य visible wavelength भी आसी परिबो like that of your green color which is having wavelength 5430 angstrom also yellow orange having wavelength 5940 angstrom and red orange having wavelength 6120 angstrom it can also be produced अच्छा HENE laser रो जदि आमे ऑपरेशन देखिबा it is operating in the continuous wave mode and the overall gain is very low okay typically यार जदि overall gain देखिबा आमे 0.01% to 0.1% रहउची but however the laser is very simple and practical and also it is very less expensive okay so एठी जो laser beam टा आमे पाइबा it will be highly collimated coherent and monochromatic single wavelength रो okay अच्छा एई HENE laser को भी आमे actually जदि तार application भी देखिबा it is widely used in case of your laboratories then your monochromatic source हिसाब रे याकू यूज करा जाय laboratory रे okay like that of your in case of interferometry laser printing barcode reading okay आजिकली जेमती आमे मार्केटिंग रे भी गुडाए जिनसर बारकोड एमती आमे लेजर लाइट पके की तारो डायरेक्ट रीडिंग हे जाय ओके सेटा टाइप करबा को तारो वैल्यू किछि पड़ेनी ओके सो बारकोड रीडिंग टा हमरो ई लेजर बीम रो ही होउची okay and these lasers will provide you very stable single transverse mode reference beam in order to identify the optical properties of the material such as surface smoothness okay most of the supermarkets jemti kohutili and other types of stores are now using these lasers as the scanners to read the digitally encoded barcodes which are located on the products okay and they are also used as a reference beam in case of your surveying for alignment in the pipe laying etc works okay so pipe alignment सीधा alignment होउछि ना नहीं because laser beam is very much unidirectional so ताकू सीधा alignment होउछि ना नहीं ताकू परीक्षा पई भी laser light टा यूज हुए let us now see the characteristics of HENE laser so first जदि हमें देखिबा टाइप एटा होउछि गोटे 4 लेवल लेजर ओके जो थरे कि तीनटा लेवल नियॉन रो रहइबो गोटे लेवल हीलियम रो रहइबो ओके रूबी लेजर थिला 3 लेवल लेजर तापरे एक्टिव मीडियम ए जगह रे इट इज यूजिंग द मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैसेस एज द एक्टिव मीडियम थर्ड पॉइंट पंपिंग मेथड एठी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड यूज होउछि पंपिंग पई
ओके इन ऑर्डर टू अचीव द पॉपुलेशन इनवर्सन रूबी लेजर रे ऑप्टिकल पंपिंग होउतला तापरे फोर्थ पॉइंट रे ऑप्टिकल रिजोनेटर जदि आमे देखिबा अ पेयर ऑफ प्लेन मिरर्स व्हिच आर फेसिंग ईच अदर आर यूज्ड एज ऑप्टिकल रिजोनेटर ओके एटा प्लेन नहले भी कनकेव मिरर भी आमे यूज करि परिबा तापरे फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट एठी आमे देखुछु एठी आउटपुट बीम रो फ्रीक्वेंसी रहउची अबाउट 4.7 into 10 to the power 14 hertz ओके आ वेवलेंथ टा आउटपुट रो accordingly standard wavelength जदि देखिबा 6328 angstrom which is lying in the visible range red in color okay our nature hela output ro it is a continuous wave okay ruby laser रे हमें pulse wave पाउथला okay power टा देखिबा output रो जदि the power of laser beam is 0.5 to 50 milliwatts for an input power of 5 watt to 10 watt okay now let us see the advantages of this HENE laser again okay so देखो एठी जेमति हमें देखिला डिस्कस कला एठी ऑपरेशन टा होची कंटीन्यूअस मोड रे कंटीन्यूअस वेव मोड रे and it is more monochromatic and more directional than the case of your solid state laser third point रे कहूची it has high stability of frequency and high coherence length फोर्थ पॉइंट रे आमे जदि देखिबा हियर नो कूलिंग इज रिक्वायर्ड ओके जेमति आमे देखुतिला रूबी लेजर रे ताकू कूल करबा को पड़थिला से सिस्टम को बाय सर्कुलेटिंग वाटर रनिंग वाटर सो दैट एक्सेस हीट जोटा सेथिरे जनरेट होतिला भितरे थिबा इंस्ट्रूमेंट बा पार्ट्स को जेमति डैमेज न करू किंतु एठी किछि सेमति कूलिंग प्रोसेस दरकार नाही अच्छा फिफ्थ पॉइंट रे यार कॉस्ट जदि देखिबा इट इज लेस एक्सपेंसिव ओके सो अल्प खर्च रे आमे एठी लेजर लाइट इजीली पाई परिबा then your application already discuss କରି ସାରିଛୁ फिर भी आउ थरे देखो it can be used in laboratory experiments in order to produce interference and diffraction patterns और एटा यूज हुए भी +3 और पीजी experiments practical रे तापरे सेकंड पॉइंट रे it is used in optical communication जोटा कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन को छाड़ी देले ए लेजर लाइट को भी हमें ऑप्टिकल कम्युनिकेशन पई यूज करि परिबा फॉर मॉडरेट डिस्टेंस ओके तापरे एटा को हमें रूबी लेजर अलाइनमेंट करबा पई भी यूज करि परिबा तापरे ऑप्थाल्मोलॉजी रे भी यूज हुए देन इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस होलोग्राम्स माने 3D फोटोग्राफ्स देन इन केस ऑफ योर रिसर्च स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलिटरी वेपन्स हला फिल्म मान करे भी देखि दिबो मूवी मान करे केतरा गन रे लेजर लाइट लागि थाए सो दैट सीधा से माने एम करि पारंती से लेजर लाइट को स्पॉट करिकि ओके now we can differentiate between the ruby laser and HENE laser as you can see so एटी फर्स्ट पॉइंट कहूची it is producing a pulsed laser beam किंतु एठी हमें continuous laser beam पाइबा in case of HENE laser then ruby laser होची 3 level HENE laser 4 level ruby laser रे pumping होची optical pumping एठी होची electrical discharge तापरे active medium होची solid state किंतु एठी होची gaseous state तापरे कूलिंग अरेंजमेंट रूबी लेजर दरकार एठी दरकार होएनी आउ आउटपुट जोटा हमें पाउछु लाइट रो तार वेवलेंथ जदि देखिबा रूबी लेजर रे 6943 एंगस्ट्रॉम एठी रहउची 6328 एंगस्ट्रॉम ओके सो दिस इज वेरी सिंपल डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ लेजर ओके सम ऑफ द इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ HENE लेजर नाउ देखो प्रथमे जदि हमें हीलियम गैस रो रोल टा देखिबा इन केस ऑफ योर HENE लेजर then it is to increase the efficiency of the lasing process actually आ यार दुईटा particularly valuable effects अछि helium रो फर्स्ट हला direct excitation neon gas रो जदि देखुछु it is very much inefficient but however helium gas रो direct excitation टा very much efficient second point गोटे जदि excited state देखुछु हमें helium atom रो which is the state E3 energy level and it is very much similar to the energy of the excited state of the neon atom which is the state E6 okay अब ये जो excitation process टा neon atom रो it is a two stage process okay two stage माने first कौन होची high voltage is causing electrons to accelerate from the cathode towards the anode and these electrons are colliding with the helium atoms and thereby transferring their kinetic energy to them okay तापरे कौन होची এই excited helium atom एबे collide होची neon atom सहित and thereby they are transferring their energy to the neon atoms for the excitation so the helium gas
does not participate actually in the lasing process, but however it is increasing the excitation efficiency, so that lasing efficiency will be increased by a factor of about 200. okay तापर सेकेंड एबे देखिबा रेड वेवलेंथ जोटा आसुची इन केस ऑफ योर HENE लेजर देखो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जदि आमे देखुछु HENE लेजर रो एक्चुअली दे आर यूजिंग द रेड वेवलेंथ बिकॉज इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन and in the visible spectrum, and this red light is actually emitted when the neon atom is going from the energy level E6 to E3. okay now ethi energy difference jodi dekhiba it is much bigger than for the other transition, but however ethi gote problem ଆସିପାରେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିଅନ୍ ଏଟମ୍ଟା ଯଦି E6 ରୁ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯାଇକି ଅଲସୋ 3.39 ମାଇକ୍ରୋମିଟର ରେଡ଼ିଏସନ୍କୁ ବି ଏମିଟ୍ କରିପାରେ। ସୋ ଏଇ ଏମିସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ପପୁଲେସନ୍ଟାକୁ ଇଏ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିଦେବ E6 ଲେଭେଲ୍ର ଓକେ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ଇନ୍ ଦ ଭିଜିବୁଲ୍ ରେଞ୍ଜ। ସୋ ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ବାଇ ୟୁଜିଂ ଦ ସ୍ପେଶାଲ୍ କୋଟିଂ on the laser mirrors which selectively reflect only red color of light, and this coating causes the reflecting back into the optical cavity of only desired red wavelength। okay आ ताकू छाड़ी देले बाकी जेते सब wavelength को से transmit कर दबा बाहर को। okay so they are not forced to move back and forth through the active medium। okay so in a similar way other selective reflecting coating भी जदि हमें use करूछु they can be used on the mirrors in order to select other transition। okay and this procedure will allow commercial production of your helium neon laser at other wavelengths in the visible spectrum जेमती हमें देखुतिला for example yellow orange green ए color रो भी हमें पाई परिबा in case of your helium neon laser they can also be produced, but the laser efficiency is much lower than that of your red because red होची हमरो strongest line एथिरे efficiency टा बेसी रहिबो सबुटु हाई रहिबो। ओके थर्ड एबे देखिबा absorption and amplification in case of your HENE laser। देखो जेते बेले लाइट टा मूव करे एक्टिव मीडियम रे दुईटा डिफरेंट प्रोसेस से रेडिएशन ऊपर एक्ट करि पारे, गोटे हला absorption आ गोटे हला amplification। गोटे यदि स्टैंडर्ड हीलियम नियॉन लेजर आमे देखिबा ताले amplification by the active medium is about 2%। okay so जदि आमे गोटे पास okay during one pass आमे देखुछु जदि एक्टिव मीडियम रे एई मूव करूची जदि तमरो लाइट टा ताले गोटे मिरर रु आ गोटे मिरर को ता माने जाउची। सो एठी एबे amount of radiation will increase by 1.02 because 2% increase होउची हला 100% means 1 और 2% increase हला so 1.02 हला। thus to get amplification of light all the losses including the collisions of the excited atoms with the walls of the gas tube and absorption by the other molecules these should be less than this 2%। ओके आ आमे जानिछु ए जो हीलियम नियॉन लेजर होची गोटे 4 लेवल लेजर। सो लाइफ टाइम जदि आमे देखिबा ऑफ द लोअर एनर्जी लेवल it needs to be very short। okay आ गोटे नियॉन गैस रे which is the active lasing gas the transition or decay from the lower laser level is not fast enough, but it is accelerated by the collisions with the walls of the tube। okay so because the number of collisions with the tube walls increases as the tube becomes narrow, so the laser gain is now inversely proportional to the radius of the tube। so tube रो diameter जदि आमे देखुछु HENE laser रे this diameter must be small as possible actually। okay in order to have a laser gain। okay आ लोअर गेन जदि आमे देखुछु एक्टिव मीडियम रे ताले देखो lower gain of the active medium in case of your HENE laser will limit the output power to obviously a lower value। अच्छा in laboratory prototypes an output power of the order of 100 milliwatt was achieved, but however commercial laser जोटा हमें देखुछु which are available only in the output range of 0.5 to 50 milliwatts। okay अच्छा गोटे output coupler थाए in case of your HENE laser actually it is a mirror having a coating
that transmits about 1% of the radiation to the output, and this means that the power inside the optical cavity is 100 times more than that of your emitted power. Okay, so this is all about your helium neon or HENE laser. Thank you.